Okay. Hello, hi everyone. Hi everyone, Radhe Radhe, सभी को जय श्री राम and hi. Let everyone join. Hi everyone. Let's just wait for other people to join and then we'll start. Hello, hi. Hi Vaishnavi Didi. Hi Cecil. How are you? Hello. How you guys are doing? Just let me know. Okay. Hello, ma'am. Hi, how are you? So, okay, we are doing today a live tarot session and it will be free from my side. And also in the last we will be discussing the remedies or techniques we can do today, as today is the biggest portal of the year and after 888 portal, of course. So let's just manifest a lot of things in our life. Yeah. Hello everyone. Jai Shri Ram. Okay. Hi. Hello Sumit ji. Let's just wait for other people also to join and then we will start our today's tarot session and then okay. Yeah. Hello Veda ma'am. Hi, how are you? So good to see you here and I'm so grateful that you joined. Hi Priyanka. Okay, so you guys just put your questions in the question box and I'll be answering all your questions first and then we'll be doing the techniques and remedy. Okay, so just please. Oh, that's so sweet. Yeah. I'm in Prayagraj only. Okay. So how you guys are doing? कैसा चल रहा है सब? And what you guys did for today's 11/11 portal? Just let me know. Hi Shitaji. Hello. And I'm so sorry everyone, I joined, I started late because of some issues and just now I reached home. So now let's do it, okay? Please drop your questions, whatever you want to ask, and I'll be just telling you all, okay? I lost my assist today. How will it go in higher? And I've got 2 clients. Jai Shri Ram, Jai Shri Ram. 2 clients that haven't paid yet. Can you remind? Hello Saransh. I've lost my assist today. Okay. So you want guidance, right? I'll give you a guidance what you can follow so that you get paid. Also you can do one thing,
I'll just give you one remedy in personal DM. Just let me know, okay, Veda ma'am, and I'll just send you the remedy for this one, okay. And besides this, I'll just give you a guidance ki what exactly can you do. नेगेटिविटी हटाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल डू दी हनुमान चालीसा डेली. उसके बाद अपने आप आपकी लाइफ से नेगेटिविटी हट जाएगी, ओके. हाय आरती मैम. ओके, सो वेदा मैम, अ वेरी क्लियर गाइडेंस फॉर यू इज़ दैट कि जस्ट हैव पेशेंस, हैव ट्रस्ट. ट्रस्ट का कार्ड ही आ गया है. सो जस्ट हैव पेशेंस, हैव ट्रस्ट इन योर सेल्फ, इन यूनिवर्स, एंड यू नो वट एवर यू आर सीकिंग फॉर, इट विल डेफिनेटली कम टू you in the right time. And just be, you know, a bit aware of people, because sometimes people do take advantage of good people, okay. What they show on their face, sometimes they are not as you think. So just be aware कि आपके जो clients हैं, आपके जो students हैं जिन्हें आप दे रहे हो, वो उनका intention भी आपके लिए अच्छा हो, ठीक है. And then you give and do charge it. Hi Diksha, hi Ahana, hi, how are you? I'm so happy to see you all here. Okay, so yeah, this was the guidance ki just have faith in yourself. You are on the most beautiful journey towards healing, and definitely this will work out, okay. Don't worry. Yeah, hi dearie, hi. Okay, when I will find peace and happiness in my life again, okay. Okay guys, I'll charge it now. Yeah, do charge it, don't give it for free. It, you know, it will, you know, distort your money energies only. So please don't charge it for free. At least take some amount. Okay, so Vaishnavi, what I am getting for you is that you are very much exhausted in your life right now. You are just tired of everyone and everything, and you need to just come out of that, you know, negative situation. You just need to explore more things in life, and you should go out, you know, you should spend some time in nature. What I am getting is you should spend some time in nature, pamper yourself, because self-love is really very important. You cannot get love or peace from the outer world. First you need to give it to yourself. The more you give yourself the love, the more you receive the receive from other people also. So first heal yourself, love yourself with the, you know, best things in your life. You know, pamper yourself, give yourself some, you know, salon time, or treat yourself as a princess, and then you will see the change ki how your energies, you know, get super amazing after this. And also take help from the people who you need to think you can, you know, they can help you, either a guide, a counselor, or someone who can guide you with the best, okay. I see ki you want some help from people, but you do not ask it, but angels are saying that go ask for the help, okay. Just don't stuck anywhere. Yeah, so this is the guidance, and let me know. Hello Rajatji, hello Pranjal, hi. Okay, लोगों को कैसे पहचानना चाहिए कि वो किसने लाइक करी है, okay. See, इसके लिए for the first thing I would say कि start doing some inner work. As you do the inner work, आपका intuition अच्छा होगा. आपका intuition ही आपको बता देगा कि कौन person हमारे लिए अच्छा है, कौन नहीं है, okay. So you can either go with ICH, inner child healing, or you can go with the Reiki healing, or all these modalities. When you start, you know, following, or you can start doing mantra chanting, that will also help you, you know, raising your vibration and intuition, and then you will easily, you know, understand ki what exactly person wants to know. Yeah, when I will join life coaching, okay. Hello Priya, hi Bhavya ma'am. Yeah, I'm just seeing hi only. Then Bhavya ji can
get into life coaching, right? Okay. Okay. So I see कि you wanted to get into this, but some way or the other आप किसी चीज़ में stuck हो, इसी वजह से आप नहीं ले पा रहे हो लाइफ कोचिंग का, अगर you want to enroll for the program. But you see कि इसमें सक्सेस है, मुझे इससे फ्रीडम भी मिलेगा लाइफ में, बट समवे और दी अदर यू आर वेरी स्टक इन दिस. सो यू आर आस्क्ड कि जस्ट कम आउट ऑफ दैट confusion, that stuckness, and just go ahead with that. Most probably what I can see is कि in coming 2 to 3 months में you will definitely get into life coaching. Within 2 to 3 months you will definitely get into that. Okay, so don't worry. Yeah. Okay, just a second. Mohit Salvanshi का question है, one card for me please about my work life and I want to open my own business. Okay, so I'll give you a guidance for this. Okay, Mohit ji, just please let me know that you are there so that I can hi, I'm good Priya, I'm good, how's you? Yeah, it was money. Okay. Happy 11/11 portal to you also. Yeah, okay. I'm telling you. Mohit ji, I'm telling you also, okay? Okay, so definitely you will start up your own business very soon, I can see, and you have planned everything. You are very clear ki what exactly I have to do and how we have to do. You have made the all plan and structured it, but the thing is some way or the other you are hesitating to start that, or something is blocking you, or maybe whenever you think to start something happens in your life. So it is angels are asking you to just heal your crown chakra and your third eye chakra, because what you think is what you receive. Agar somewhere or the other you get the thought ki pata nahi I'm starting and it will work out or not, तो there itself you have just आपने एनर्जी को खराब कर दिया वहाँ पे. Whatever you will think, your every thought is very important for you. तो इसीलिए just be positive, start healing your chakras. आपके chakras थोड़े से unbalance है. I can see your solar plexus chakra, or you can see this card, healing का card आया है. So you should do healing, you should do Reiki healing if possible, or you can just learn it or take any from Reiki healers आप ले सकते हो, या फिर you can take from me also. And just start doing Ho'oponopono prayer if you know. Please, I'm sorry, please forgive me, thank you and I love you. It's a Greek prayer, it's a forgiveness prayer, and it's very miraculous. Okay, so just start doing this for yourself and just start healing your chakras, because then only you will get clarity in your life, and then only you will start your business and work, and it will go very good. Trust me, just start it. Okay, so yeah, this is the thing. Okay, Jai Shri Mahakal. Hi Kaveri, how are you? Hello, card for me for my studies. Okay, exclusive, please send me your name, because without name it's not possible. Most welcome. When will I get married? Hello Bimbi ma'am, how are you? Sure, thank you so much. Most welcome. And if you need any help, just DM me in the personal, okay? Yeah. So when will I get married? Hello Ravindra ji. Okay, Priya, checking your question, okay? Yeah. I can see most probably next year बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट ईयर तक हो जाएगी. एंड 25 वीक्स to 30 वीक्स का टाइम लेगा. ठीक है, 25 वीक्स to 30 वीक्स में हो सकता है कि आपका बात हो जाए एंड फिक्स हो जाए. मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट ईयर इज़
most probably 70 to 80% is pakka. Okay, so yeah. And also I shared some remedies on my page, so you can follow that also. For more, you can take consultation with me. Yeah. Hello, Radhe Radhe. I'm good, dear. I'm so happy and grateful that you joined my live. Thank you so much, Purnam. Hello, Hoshiar. Hello, everyone. You're great now. Please, thank you so much. But you are more great than me. Yeah. And how was you? Oh my God. अरे नहीं सर, क्या बात कर रहे हो आप? राधे राधे. Okay, so anyone else? Hi. और आपका कोई question? Please let me know, guys. Ruhani. Okay, Ruhani. Okay. I'm checking yours. Yeah. For my studies. Okay. ठीक है. Ruhani, what I'm feeling for you is, dear, कि you always know whenever you start studying, or you think of studying, or जब भी studies की बात आती है, you I don't know why, but you postpone this and you feel it like as a burden. I don't know which subject you are studying, or in which school or college you are. बट वेर एवर यू आर, आप उस चीज़ को बहुत बर्डन की तरह ले रहे हो, बहुत ज़्यादा पोस्टपोन कर देते हो. यू डोंट फील लाइक स्टडिंग दैट सब्जेक्ट, पर्टिकुलर सब्जेक्ट देयर कैन बी. सो दिस इज़ द थिंग. इट इज़ आस्क्ड दैट जस्ट हैव फेथ, जस्ट क्लियर योर माइंड. ओके, थोड़ा सा अपने आप को शांत करो, काम करो, मेडिटेट करो एंड ग्राउंडिंग करना स्टार्ट करो. व्हाट यू कैन डू इज़ इन द मॉर्निंग गेट अप इन द ब्रह्म मुहूर्त. उस टाइम पर जाओ, आप ग्राउंडिंग करो 5 AM 5:30 AM के आसपास. एंड देन आप वहाँ पे बेयर फुट ग्रास पे चलो थोड़ी देर. डू द ब्रीदिंग एक्सरसाइज इन मॉर्निंग. एंड उसके बाद थोड़ा सा मेडिटेशन करो इफ पॉसिबल. लिसन टू द सप्लीमेंटल्स. आई विल सेंड यू द सप्लीमेंट्स इफ यू वांट. एंड लाइफ विद इट्स इलीगल. ओह कम ऑन यार होशियार, इट्स नॉट ताश. ओके प्लीज. या. So stop making fun of me, I know. Hello, Minnie ma'am. Yeah, Kaveri, I'm telling you also, okay? So, okay, we are the one. Yeah. So this is what angels are telling you, dear Ruhani, that just start focusing on yourself, because I think you, whatever you are studying, it's really important for you, but you cannot focus on that. So start doing all these remedies which I told you just now, कि grounding करो, meditation करो, start waking up in Brahm Muhurt, stop sleeping late at night, and then you will see a shift in your energies. The moment you will start waking up in Brahm Muhurt, you will definitely see your changes in 21 days. Just try it and just let me know, okay? Yeah. Okay. So बिहारी जी से पूछा क्या मुझे नहीं, I did not ask him. I was busy. Please can you share guidance for finances and income? Lately feeling very stuck in this area of life. What can I do? How should I manage this money and finances? Okay Kaveri, I'm checking yours. हाँ, you just drop your question, I'll check it for you, don't worry. Okay. Okay, so what I think, Kaveri, is that there may be some incidents happened in your life related to either taking clients or students, and they might have ऐसा हो सकता है कि आपको disappoint किया हो, and you are just stuck on those incidents related to money. Okay, and your money energies are really
very down this time, you are just clinging to the past का card आया. See, you are very stuck in the past, memories of related to finances or maybe childhood related, some trauma I can see. So just start doing the trigger release as you are Reiki, healer yourself. So just see, and Reiki का card भी आया है, healing का card आया है. So just start balancing your chakras. I see your root chakra is somewhere, थोड़ा सा unbalanced है. To try doing Reiki on your root chakra and balance it, and let go of the past things, whatever happened, just let go of it. Just do the forgiveness prayer, do the customized healing, and yeah, okay. So this is what, and you are very experienced, okay, you know everything ki, how you should manage everything, your finances, your money and everything. Just go ahead, just follow your intuition. You are such an blessed person. So just follow this guidance and do the trigger release. Definitely it will work for you, okay. And I'll be sharing some techniques. You can do it today, okay. That will help you a lot. And also you can do the 11-11 technique for this, and do the trigger release definitely today, because today is such a big day for manifestation. 11-11 portal hai. So whatever you will release the toxicity and negativity from past, it will really change your coming future, okay. So yeah, this was for you. Okay, I am unable to get high ticket client, but I am able. Oh, most welcome. Unable to please still. Please let me know areas of improvement. Okay. I'll check it for you. Bhavya ma'am. Yeah. I remember. Hi Dipya. मैंने पूछा यार एक क्वेश्चन, चेक करो एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड. About health, luck and career. Okay, Hoshiyar, I'm taking your question first, okay? About health, luck and career. Okay. See, what I'm seeing, Hoshiyar, for you is that health wise it's most probably going good, but बीच में I don't know, some tensions or something arrive in your life and you just feel totally exhausted, or लगता है कि यार what is going on, then you start anxiety and depressing kind of mode आ जाता है life में. So just try to come out of that. There are some people in your life who are showing very good on your face, and they are very bad at behind your back. So you have to identify who those people are, and don't share your things, your goals, your ideas with them. Yeah. Hello everyone. Yeah. So just change that thing in yourself कि you trust very easily to the people, okay. So it's really important for you to trust your intuition first. Don't go for everyone who is showing good on their face, okay. This is the biggest guidance for you, and this is the reason behind your all the stress and health issues. So just come out of it. And you asked for your which luck also, luck and career, okay. So what I see for your career ki very soon in your life there is some breakthrough is about to happen. कुछ अच्छा ब्रेक थ्रू आने वाला है, एक बहुत अच्छा मोमेंट आने वाला है जहाँ से तुम्हें हो सकता है कि बहुत जल्दी कुछ बहुत अमेजिंग ऑफर मिल जाए या कुछ बहुत अमेजिंग प्रोजेक्ट मिल जाए. इट इज़ रियली वेरी पॉसिबल. So just go ahead. Just what the guidance is for you कि don't get exhausted. बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हो. Don't get tired. Don't feel कि मुझे इतना डिले क्यों हो रहा है मेरी लाइफ में. It's a journey and everyone has different journey, different divine timings. So उसको believe करो, अपने आप पे believe रखो, and बिहारी जी पे believe रखो. He will take you out from this suppression which you are feeling right now, okay.
ये सप्रेशन तुमने खुद से क्रिएट कर रखा है, तो उससे बाहर निकलो एंड जस्ट सरेंडर योर सेल्फ टू बिहारी जी. ही विल जस्ट मेक एवरीथिंग फाइन फॉर यू. डोंट वरी एंड जस्ट बी ग्रेटफुल फॉर what you have. Just show gratitude to universe ki what exactly he is blessing you with, what things you have in your life. Just cherish that, just be grateful for that, and everything will come for you. Don't worry. And for your luck, I can see it's very good right now. Very soon, abhi to like you are very chill, you are enjoying some luxuries in life, you are enjoying chill moments in your life. So this is what I can see for you. And also you are spending a lot of time with your family and friends, and hi Pallavi Di, hi everyone, hello Manoj. So yeah, and you are enjoying your life right now, but some way or the other there is a side of yours which is stuck or negative a lot. So yeah, this is what and कुछ बहुत जल्दी लाइफ में एक ट्रैवल होगा, and that travel will be really very fruitful for you. So just wait for that travel, and हो सकता है कि उस travel में तुम्हें एक कोई break through मिल जाए. This is I can sense for you. Okay, angels, this is what I see. And yeah, and kabhi be just hopeful, don't get negative all the time. Yeah, Pallavi Di, please drop your question, what do you want to ask, and I'll check it for you. Yeah. So this is what I am telling you कि just be hopeful, कभी give up नहीं करो, because we never know कि next moment हमारे साथ क्या biggest surprise universe हमें देते हैं. ठीक है, just be hopeful and be grateful what you have. Yeah. So such a sweet soul. Oh, same here, buddy, same here. I'm so grateful to have you. Yeah. Okay. All over reading how health wealth. Okay, I will give you the guidance for each. Okay. I'm so sorry. Just a second, Bhavya ma'am. I'm taking your question first. Okay. I'm unable to get high ticket client. What am I unable to list? Okay, please let me know. Okay, Bhavya ma'am, what I'm seeing right now for you is you are very quite negative these days, because 3 cards came of swords cave. You are just grief में हो आप बहुत ज़्यादा इस टाइम पे. यू आर जस्ट being negative कि why only happening with me, और मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ये negative. Why you are seeing कि everyone is doing so good, why I'm not doing good, that much का that kind of thing, why I am not getting. So some way or the other you are yourself creating that negative thought, negative energy. You need to come out of that thing. So just try to do the trigger release. If you are a ICH student, then just do the trigger release. It's really very important for you right now. And hi Radhika ma'am, hi, how are you? Take care. Radhe Radhe. Okay, so yeah, and just come out of that confusion that कि हर समय you are stuck a lot, and you feel like कि पता नहीं हो पाएगा मेरे से भी. Sometimes you question your own self worth. So it is really very required for you right now. Just come out of that negative phase, negative area, or maybe negative surrounding. What I can see कि आपके surrounding में भी कहीं ना कहीं there is some negativity or negative people. So just come out of that and just celebrate each blessing that you have. Okay, you can also just go out, you can just do some outings or explore world, and you can just go on a vacation or to rejuvenate yourself. Just do all these things. Just try to make yourself come out of this negativity first. Just do the trigger release, do the gratitude affirmation every day. And today is the best day for manifesting things. So start doing manifesting, rather only focusing on why I'm not getting cats. Just say कि
am getting clients, okay, you are getting high ticket clients and you are very happy and grateful. So start expressing gratitude to universe and you will definitely see the change after this. Okay, you have the source, you have the capability, you are so talented in yourself. Just be grateful and just be hopeful for yourself. Okay, love yourself, embrace yourself, respect yourself, and then you will definitely get that same from other people also. And एक बहुत जल्दी new vision, you are getting a new direction in your life. Maybe in some time or in coming weeks there can be some any of your biggest manifestation can come true. This is what I can feel. And maybe it is related to your question only. Maybe you get a very good client when you start doing inner work regularly and whatever remedies I just told you. So start doing that and just let me know ki, what is going on, then I'll help you with that. Okay, yeah, lots of love. Okay, what is it? All the best. You're doing the program right. Oh, thank you so much, Radhika. I'm so blessed and grateful that you are here joining me, and just thank you for blessing me. Lots of love to you. Okay, started with ICH. Yeah. Just do the inner child healing every day. Do the trigger release every day, and just go through that 4-week journey. So it will really help you. Hello, Lucky ji. Yeah. Hi, Sachin ji. Hello. Okay. What does happen? Just a second. Okay. So yeah. ओके, ये इंस्टाग्राम का ना बड़ा अजीब है. या ओके पल्लवी दी, आई एम टेकिंग योर क्वेश्चन फर्स्ट, देन मनोज जी आपका आई विल बी टेकिंग. ओके, या okay, wow. So Pallavi Di, I can see for you that your career is right now going very good. Okay, and you are enjoying the bliss. Okay, you are just investing yourself in yourself, and in maybe some jewelries or investments you are doing, and you are just enjoying that. So I can see in career wise you are very well satisfied and very okay with it. And but I can see in your health में थोड़ा सा you are facing some issues, maybe related to throat or related to lungs से लेकर throat के बीच में कुछ issues you might be facing, or you cannot express yourself easily with people or your near dear ones. So I think you need to heal your throat chakra somewhere. I can feel that your throat chakra is imbalance, and you need to just heal that throat chakra. I will send you some affirmation. You can just chant those affirmations later daily when in the morning you wake up and before going to sleep. Okay, so just start doing this and let me know. And in love also I can see things are going good, but somewhere or the other there might be some tensions as of right now. Maybe you are taking some decisions, and in those decisions you are a bit confused about something from your partner side. So this can be the reason. Okay, so just the guidance is key. Be optimistic and just try to understand what the other person is trying to say for you. Okay, what exactly he wants to express, and टेक दोनों के व्यूज़ के अकॉर्डिंग एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिठा के देन वो चीज़ पे काम करना या डिसीजन लेना इफ़ यू आर अबाउट टू टेक समथिंग डिसीजन और समथिंग. ओके, so yeah, this is for you, and overall everything is good. Just some healings are required for you. Okay, chakra थोड़ा सा imbalance है for you, and just you can say you can do meditation. You can do the 11-11 technique if you have to manifest anything in your life. So you can do the 11-11 technique today, and yeah, this was it for you. Okay, so yeah,
hello everyone. You are from? I am from Prayagraj and currently I'm living in Mumbai. Yeah, definitely. Pray for me. Love you more. Hi everyone. Hello. Hare Krishna. Yeah. Jai Bageshwar Dham. Most welcome. Radhe Radhe. Hello, can you share us 11 technique? Share some more. Yeah. I'll be sharing some posts. Just a second. Let me check what is the time. Okay. So I'll be sharing everything. I'll be sharing few remedies that you guys can do today. And okay, in last 7:40 say 7:50 say we will be starting the remedy. 10 minutes we will give two remedies only. Okay. So till the time. Hi Priyanka. Hi, how are you? Hi, can you tell me about me? Can you tell me any specific question you have? Hi Ayushman. Hi. Hello Sudarshan. Hi. How are you, Dee? Just let me know. And hi. About business. Okay, I'll give you the guidance for this. Jai Shri Ram. One more question. Yeah, please go ahead, sweetheart. Okay, Jai Shri, I'm checking yours, okay? Just be there. Okay. So, Jayesh, what I can see for you is that right now you have might be investing a lot in your business, or you might have invested a lot in your business or something, but you are not getting that sort of profit or return which you were expecting in starting. Okay, this is what I can see. There may be some things which is not going well. Maybe there is some problem with your strategy of business. Maybe there is some problem with how you are managing it, because you are the way your business is going right now, वो आपके लिए एक burden बन गया है, and it is really taking your peace of mind. So it's really important कि first you check कि exactly what you are using the strategy for your business, because this is really important कि how we are strategizing our business, and exactly how it's getting managed properly. So this is what I can see. Just don't take a lot of burden, because whatever is going it's for short time. After some time you will definitely come out of this negative phase of your life. You are getting blessed with some blessing of guru or your divine, or the person, or your god with जिस पे भी आपका बिलीव है, आपके गुरु हो या आपके भगवान जिन पे भी आप बिलीव करते हैं, वो आपको बहुत ब्लेस कर रहे हैं, आपके साथ हैं, एंड ही इज़ ऑलवेज वॉचिंग ओवर यू. आई एम जस्ट टेकिंग वन गाइडेंस कि व्हाट एग्जैक्टली यू कैन डू फॉर योर बिजनेस कि आपका अच्छा चल रहा है. ओके, सो वेरी क्लियर गाइडेंस इज दैट कि अगर आप आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ करने की कोशिश करते हो, दिस इज़ वाई यू फील स्टक एवरी टाइम. आप बहुत सारी चीज़ें अगर एक साथ करोगे तो आप उलझ के रह जाओगे. यू विल नॉट बी एबल टू बी क्लियर अबाउट योर कि व्हाट एग्जैक्टली यू हैव टू डू. तो इसीलिए कार्ड इटसेल्फ शोज कि आप एक कदम आगे बढ़ाओ, एक स्टेप लो अपने काम के लिए, एंड देन यू विल सी कि व्हाट रिजल्ट्स यू विल गेट. या एंड डेफिनेटली जब आप एक काम करोगे, एक धीरे धीरे स्टार्ट करोगे, अपनी लाइन पे लेके आओगे चीज़ों को, यू विल चेक कि वेयर एग्जैक्टली आई एम गोइंग रॉन्ग, वेयर एग्जैक्टली आई हैव टू वर्क, then only you will get abundance in your life, because you are very talented, you are very capable, you are you have good qualities of doing business. And then when you will understand कि exactly कहाँ पे problem है, you will definitely come out of this negative phase, and you will get beautiful results in your life. ठीक है, आपको जो भी आप बहुत efforts डाल रहे हो उसके फल आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे. So yeah, and whatever remedies I'll just share in the last, just follow those remedies today, and you will definitely see a change in your life in 21 days. Okay,
these remedies will be very good. We have one more question. मैं ठीक हूँ बेटा, looking so good. Oh, thank you so much. Not more than you, but okay. Yeah. So yeah, one more question if that's okay. Yeah, please ask. Ask and all. Which one can you please? आज जा रहे हैं धाम पर. Oh, I miss it यार. मुझे भी जाना है धाम. I'll be going maybe in December, very soon, or maybe November end में I'll be. Hello Varsha ma'am. Hi, how are you? Jai Shri Ram. Jai Shri Krishna. Ashima, I skipped my question. Oh, I'm so sorry. Manojji, I'll just take your first. Okay. Where is the question? Yeah, my question is whether I have chances to visit Kailash Mansarovar. Okay, you will definitely go. Why you are doubting it? Ki you will not be able to go. Just manifest it, and you will definitely be going, है ना? And Shivji will definitely be calling you. So don't worry, but I'll check for you कि when you will go. Okay. 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 Okay, wow. So what I can see कि थोड़ा सा अभी you wanted to go Kailash Mansarovar, you are very excited for that also, but at the same time patience का card आ गया है. So just universe is telling you, angels are just telling you कि just have patience. जो डिवाइन टाइम होती है ना वो बेस्ट टाइमिंग होती है. हम चाहे कितना भी परेशान हो ले, जब उन्हें बुलाना होगा, ओके, शिव जी को जब बुलाना होगा वो आपको बुला ही लेंगे एट एनी एनी वे. सो जस्ट बी होपफुल, मैनिफेस्टेड, भगवान जी से प्रे करिए कि वो आपको जल्दी से बुला ले. ऑल्सो देयर इज़ कभी कभी यू फील लाइक वेरी कि यार बहुत दूर है, तो अगर मौका बन भी रहा होता है तो आप थोड़े से लेज़ी हो जाते हो उस टाइम पे, तो you skip that opportunity maybe. So this what I can see, but have patience. He will definitely call you. What I can see is maybe in 2 months or 2 years. Okay, this I can see because double 2 आया है, and angels is also saying 2 आया है. Angels was also saying कि don't worry, you will be just getting there on time. ओके, जब भी डिवाइन टाइम होगा अपने आप वहाँ पे चले जाओगे, इसलिए इतना परेशान नहीं होना है. एंड जस्ट कीप प्रेइंग. इट इज़ पॉसिबल कि आप 2 से 4 महीने भी जा सकते हो, या 2 साल लग सकते हैं. ठीक है, दिस इज़ व्हाट आई एम सी. तो या दिस इज़ द रीजन फॉर यू. एंड या कावेरी, प्लीज़ कैन यू सेंड मी द क्वेश्चन अगेन डियर? आई डोंट सी. Radhe Radhe Anandji. Can you please tell me what to do get the proper results? Yeah, I'll be sharing the remedies after this, so you can just follow those remedies. Okay. Hi Khushi. Wanted to know when will I get to move abroad? Most welcome. Hello Lena ji. Okay. लग रहा है बताना पड़ेगा. बता दीजिए, उन्होंने ही मेरा टैरो कार्ड चार्ज किया था लास्ट टाइम. ये कार्ड्स उन्होंने अपने हाथ से चार्ज किए. सो आई एम जस्ट रियली ब्लेस्ड, एंड दैट टू ऑन माई बर्थडे. सो आई एम जस्ट रियली ग्रेटफुल फॉर दिस. दिस इज़ वाई रीडिंग्स आर सो एक्यूरेट राइट नाउ. ओके, सो या कावेरी, आई एम टेकिंग योर क्वेश्चन. ओके डियर, wanted to know when will I get to move abroad and for education or work, or what exactly? Can you guide me on what it is and how I can make it happen? Okay, I can tell you कि exactly when you will be able to go abroad, है ना? And first let me check कि will you be able to go, and if yes then when. Okay. Yes. Definitely you will be going to abroad, and you will be very at that time you will be very knowledgeable, full of knowledge, full of spiritual powers, and you will be having a lot of fulfillment in yourself when you will go there.
Okay, and I can see for healing work only you can go, because see healing का card ही आ गया है for you. So this can be, you know, the thing कि maybe you go for some healing retreat or this kind of thing I can sense for you, or maybe you organize your workshop or something or retreat for, you know, your community. So this can be the thing for you. Yeah, and just let me check कि when will you will go. Okay. I can see maybe 8 से 9 महीने लग सकते हैं if you're planning to go next year, and maybe September या August के आसपास में. And I think we will be going to abroad because we are having Dubai summit, yeah, in August. So maybe at that time you know go to abroad and see, this is how it gets connected. Healing का card आया था, and that summit will be totally of healing and all these energy work के लिए भी. And it is coming for August and September only, and the summit is also during August. So this can be the scene, okay? Yeah. And maybe for you know, work also you might go next year in near August or September के आसपास. Yeah. Yes. Yeah. You will be going next year. Hi Anshika. Hi Pranali. Hello. I wanted to know when will I be able to. Okay. Thank you. Most welcome. Hello. Thank you. Radhe Radhe. Hello Ashna Pratame. Yeah. I remember. How can I forget you? Yeah. Okay. This is better. So wow. Ashi, how? Okay, just a second, Khushi. I'm taking your question only. Yeah, Ashi, how will my 2025 be like in terms of career and relationship? Okay, I'll check for you. You are such a sweetheart, okay? And may Radha Rani bless you always, always. Yeah. Wow, beautiful cards. Wow. Okay, so for your career, I'll tell you first. You are just, you know, going to do something out of the crowd. See, you can see this card, success ka. Now what else you want in your career? Next year will be full of success for your career. You will be getting what you really want in your life. जिस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो कई सालों से या कई महीनों से, उसका फल मिलने वाला है in 2025, and you will be like a queen, okay? You will be getting a lot of recognition. You will be getting, you know, lot of abundance into your life. You will be pampering yourself, as well as you will be sharing those abundance with other people also, maybe your family, your friends, and you might be doing some charity, all these things, because next year is, you know, totally for your success, you know. So whatever things have been stuck till yet, next year is going to be super amazing. Don't worry. And in relationship, I can see there might be some you know, burdening situations can happen जो आपके लिए burden हो सकता है, या maybe you have to compromise on some things related to any relation or something. So ये कुछ scene हो सकता है. At that time, what is asked for you कि just you know, take guidance from a counselor or a healer कि what exactly should you should do in that situation. Okay, that will really help you in that. And although everything will go good, but there might be, you know, some situation in your relationships कि you have to, you know, compromise on something, or maybe ऐसा situation हो जाए कि you feel burden over that. Just so, उस time पे क्या करना है कि बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है. Don't, you know, mess yourself, because your career is really very important, and उसको किसी भी कीमत पे compromise नहीं करना है. This is what I am getting for you, okay?
So if that kind of situation comes in your life, just tell me. I'll be giving you the guidance at that time to what exactly you can do. And yeah, okay. So this is what for you. Hello, hi Ashima. I wanted to know what. Hi Anshika. हमारे बारे में कुछ बताइए प्लीज़. शंकर गढ़ वाले आप अपना क्वेश्चन डाल दीजिए. आई विल जस्ट टेल यू. ओ एम जी मोस्ट वेलकम. माई क्वेश्चन. Okay, just a second. First, I'll take Anshika your question. Then I'll be taking, and then I'll be ending the meeting this live stream because I have another session also. Okay, government job exam. Okay. इसमें बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके बर्डन फील कर रही हूँ अंशिका. वेरी स्ट्रेस्ड अबाउट कि विल यू एबल टू क्रैक दिस एग्ज़ाम और नॉट. अगर नहीं हुआ तो क्या होगा एंड ऑल दिस थिंग्स. या सो आई कैन फील दिस. Yes, you will definitely clear that exam with success, with good marks, okay. But the only thing is कि अब तुम कभी कभी बहुत lazy हो जाती हो and you postpone things, you postpone your maybe studies. You feel like कि चलो कल देख लेंगे, कल पढ़ लेंगे, या you go out with your friends or you enjoy something or you watch a movie और फिर वो चीज़ ना नेक्स्ट डे पे टल जाती है. वो नेक्स्ट डे पे टालना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तुम्हारे लिए. सो इट्स द रिक्वेस्ट एंड अ गाइडेंस फ्रॉम एंजल्स कि जस्ट डोंट पोस्टपोन थिंग्स एंड डोंट गेट कन्फ्यूज. जस्ट बी क्लियर विद योर विजन कि व्हाट एग्जैक्टली यू हैव टू डू इन योर लाइफ. ओके, एंड द मोमेंट यू विल बी क्लियर कि व्हाट एग्जैक्टली आई हैव टू डू, you manifest it and it will really happen because see success का card ही आ गया for you. Okay, so just be in your power, be in that rebellious वाला mode में, and then you will be able to crack it. Definitely will crack it. Okay, and let me check you when you ask ना तो okay, next year का I'll check it for you. Okay, next year is पक्का है कि whenever you will give exam you will be clearing it. You will definitely clear it. So अगर if you are preparing for next year it will be cleared. Don't worry, just keep manifesting it. Okay, yeah, this is what the guidance for you. Okay, my question, how much time taken solve my problem? Okay, it is what kind of problem, can you please tell me? अर्पिन भैया प्लीज़ आप मुझे अपना क्वेश्चन एग्जैक्टली बताइएगा कि क्या यू हैव प्रॉब्लम एंड हाउ देन ओनली आई विल बी एबल टू टेल. ओके, टिल द टाइम आई विल टेक ओके, आई एम टेकिंग योर क्वेश्चन सुदर्शन. हाउ विल माई 2025 career and okay, I'll be taking yours. Wow, very good. You are just going good right now in your career. You are just stepping एक सीढ़ी stepping towards success. Very soon you will be getting some beautiful opportunity in your life, and 2025 will be like you will be getting growth and success according to your experience. Okay, अभी you are just taking a lot of experience. You are practicing a lot of things. You are getting gaining experience with that, and next year those experience are really going to change your work style, your routine, your it will help you grow your business. Your mindset will change, your lifestyle will change, and I can see you will be आप कुछ डिसीजंस ले सकते हो
with a lot of ग्रैटिट्यूड एंड मेच्योरिटी के साथ, बिकॉज आई कैन सी कि आप यूजुअली कुछ अगर डिसीजन लेना होता है या कुछ कोई काम करना होता है तो यू गेट वेरी हैस्टी इन दैट, है ना, बहुत ज़्यादा आप जल्दबाजी कर जाते हो, इसीलिए आई कैन फील कि वो डिसीजंस कभी कभी गलत भी हो जाते हैं. सो इट इज़ रियली इम्पोर्टेंट फॉर यू कि जस्ट बी मच्योर, बी थिंक एवरी टाइम कि थिंक 10 times कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. इफ़ यू आर टैरो रीडर और टैरो स्टूडेंट, जस्ट गो अहेड विद दैट, okay, and just take guidance from tarot if possible, and if not then just ask me or any of our committee member who is tarot reader, and just take the guidance whenever you want to make any decision, or you have to work in something, or you are confused. Okay, so then you can take. Otherwise next year is super amazing for your career, and you are just coming out of your comfort zone, you are embracing yourself, you are learning new things in life. आप अपने आप को पहचान पाओगे कि next year what exactly you are. Okay, so this is for you, and yeah, and just one guidance is for you कि don't postpone things. You often आप चीज़ों को टाल देते हो बहुत ज़्यादा, तो ये एक आदत है थोड़ी सी ख़राब है, इसको चेंज करो, and just keep manifesting it. It will definitely best year of your life. Just start saying कि 2025 will be the best year of my life. Okay, so yeah. Hi Rajat, hello. Yeah, I'll just call you after that. Okay, after the session. मेरे करियर के बारे में बताओ. Okay, Aman, I'll tell you. Okay. Please tell me. I'll give you a guidance for this. Okay. Okay, fine. Very clear guidance I'm getting you. See, what I can see is that right now, what is the situation? Ki you are just facing either some battles within yourself. कुछ लड़ाई चल रही है अपने ही अंदर से, अपने ही साथ, और you are trying to take control of the situation, or might be in your surrounding also there can be a situation which is not so good. There might be some negative conflicts or quarrels at home, or you're in your surrounding, or maybe you are right now battling between within yourself. Okay, so what is exactly universe is telling you, angels are telling you, try to make harmony, focus on peace, focus on yourself, focus on your healing, because you are blessed from lot of universal energies. What I can see a lot of universal energies is coming from up and entering into your body. Okay, so you are very powerful, you are very intuitive, you are blessed with a lot of things. Just embrace those things and embrace yourself. Just be positive, because being positive is the only key to get whatever you want in your life. Agar if we always think negative and negative and negative about anything, maybe it's anything, in joke also, it will give you negative impact on you. Okay, so it's just a thing for you, it's just a guidance for you. You are very experienced, very talented, you know everything, you are specialized in a lot of things. Just use those skills, invest in yourself, embrace yourself, love yourself, and then you will see a change within you. Okay, so yeah, this is the reading for you, and now I will be just taking some last questions. And yes, job छोड़ दिया, business में you be so accurate. it's cards, it's angels, I'm just a medium. जॉब छोड़ दिया, business में ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते, business में ठीक नहीं चल रहा. Okay, I'll Shankar Gadwal, I don't know your name, I'm so sorry. I'll just give you a guidance for your question. ठीक है, so new business करें या old business में ध्यान दें? Okay, first let me check your कि आपकी business के लिए क्या guidance है. Okay, ठीक है.
फर्स्ट आई कैन सी कि आपके बिजनेस में आप बहुत ज़्यादा अपने पास्ट की चीज़ों को लेके उसी में बहुत ज़्यादा स्टक हो, आप हर समय पास्ट की नेगेटिविटी के बारे में सोचते रहते हो, उसी में आप उलझ के रह गए हो। तो यूनिवर्स इज क्लियरली सेइंग यू कि जस्ट हील योर सेल्फ प्लस फर्स्ट एंड क्लटर जो आपके माइंड में भर गया है अभी, यू आर जस्ट ऑलवेज बीइंग नेगेटिव, ऑलवेज स्टक ऑन ऑल दोज पास्ट नेगेटिव मेमोरीज, जस्ट कम आउट ऑफ फ्रॉम दैट। ठीक है, अपने आप को हील करिए, जो हो गया उसे जस्ट फॉरगिव कर दीजिए एंड आगे बढ़िए। दिस इज़ व्हाट यू कैन डू फॉर योर सेल्फ एंड इट विल रियली हेल्प यू इन गेटिंग सक्सेस। ऑल्सो यू सेड कि न्यू बिजनेस करना चाहिए या ओल्ड बिजनेस, दिस आई विल चेक इट फॉर यू। ओके, ओके, व्हाट आई कैन सी कि जो आपने नया बिजनेस स्टार्ट किया है आप उसी पे कंटिन्यू करेंगे तो बेहतर होगा। आपका जो पास्ट का बिजनेस रहा है वो आप उसमें काफ़ी आपका मन भी नहीं करता रहेगा एंड इट ऑल्सो रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट आई थिंक। सो यू आर रादर गोइंग इन दैट, यू आर थिंकिंग टू गो विद द न्यू बिजनेस यू स्टार्टेड बट यू आर कन्फ्यूज। सो इफ़ यू आर कन्फ्यूज देन जस्ट बी क्लियर कि आप जो नया बिजनेस कर रहे हो वही आपके लिए बेस्ट रहेगा, बिकॉज इसमें भी आपके लिए सक्सेस का कार्ड आ गया है। I don't know why, but a lot of people are getting success card today, so it's beautiful energy of today's 11/11 portal, and you guys will be definitely manifesting your dream life, your whatever you are manifesting for. So I'm so happy for you all, it's very amazing. Okay, so yeah, just last few questions and then I'll just tell you guys the remedy and कोई भी वर्क नहीं हो पा रहा है, मनी नहीं आ रहा है, टेंशन मिस हो रहा है, कुंभ मेला का। ओके, मोस्ट वेलकम सुदर्शन, राधे राधे, जॉइन। हेलो हेमंत भैया, हेलो आशिमा जी, मेरे घर एग्ज़ाम। ओके, a lot of questions regarding me. I told you ना Aman, I told yours. Okay, most welcome. Okay, I am taking Arvind भैया your question first. Okay, yeah. आपके लिए एक मैं गाइडेंस ले रही हूँ कि एग्जैक्टली आप क्या कर सकते हो और क्यों प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, अभी आप जहाँ जा रहे हो ना वहीं से आपको सारा सोल्यूशन मिल जाएगा, डोंट वरी, बिकॉज सी मास्टर का कार्ड आ गया है। तो गुरु की कृपा तो है ही है और जो भी होगा गुरु की कृपा से ही होगा। ठीक है, सो डोंट वरी, सब सही हो जाएगा बहुत जल्दी, बिकॉज अभी तक क्या हो रहा था आपकी लाइफ में, you are feeling very alone, you are feeling कि as if nobody is helping me, या you are expecting from some people कि आपकी वो help करे but they did not help you at that time when you really need that. So ये सारी चीज़ों से ना आप काफ़ी परेशान, you feel like I'm so alone, nobody is there in my life, nobody is helping me and everyone is like सामने से कुछ और होते हैं, अंदर से कुछ होते हैं, यू फील लाइक ऑल दिस थिंग्स राइट नाउ। बट द थिंग इज कि एंजल्स आर जस्ट सेइंग यू हैव फेथ इन योर सेल्फ, हैव फेथ इन डिवाइन, हैव फेथ इन बागेश्वर बालाजी, बिकॉज ही इज़ ब्लेसिंग यू विथ समथिंग वेरी बिग। ओके, जो भी अगर चीज़ नहीं हुई है ना, कहीं ना कहीं उससे कुछ अच्छा हमें मिलने वाला है, इसीलिए यूनिवर्स एंड भगवान जी हमें वेट कराते हैं। वो चीज़ अगर नहीं मिली तो उसके पीछे कुछ रीज़न होगा, इसीलिए वो चीज़ नहीं मिली। एंड मास्टर का कार्ड आपकी रीडिंग में आ गया है, विच मीन्स कि डेफिनेटली आने वाले टाइम में यू विल बी गेटिंग समथिंग वेरी बिग व्हाट यू हैव एक्सपेक्टेड फॉर। ओके, सो जस्ट डोंट वरी, हैव फेथ, कीप वर्किंग and you will get success. Okay, don't take stress because I know you are feeling a lot of stress these days, so just don't worry and whatever remedies अभी मैं बताऊँगी वो आप करना स्टार्ट करिए, it will definitely work for you. Okay, yeah. Hello Ashima ji, hello Mansi, I think I'm right. Yeah, okay, I'm getting 2 questions career का. Sumit ji, I'll take your question first. I'll take Mansi's question.
Okay, I'm just taking your question answer. मानसी, देयर आर चांसेस कि क्लियर हो जाएगा. इट्स लाइक 40 to 60% चांसेस है. आई कैन सी दैट कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है. ऑल्सो मैनिफेस्ट दिस फॉर योर एग्ज़ाम. एंड लेट मी चेक अगेन फर्स्ट. आई थिंक आप बहुत ज़्यादा these days you are enjoying a lot, you are chilling a lot and you are not properly focusing on your exam, है ना. तो दिस कैन बी द रीज़न वाई यू आर फीलिंग कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहना तो छोड़ दो कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, नहीं लगाना छोड़ दो. यू जस्ट स्टार्ट सेइंग कि होगा ही होगा. आई विल क्वालिफाई दिस एग्ज़ाम विद वेरी गुड मार्क्स. ओके, जस्ट ट्राई टू मैनिफेस्ट दिस. ओके, टुडे इज़ सच अ ग्रेट डे. आप मैनिफेस्ट करो एंड इट विल डेफिनेटली हैपन बिकॉज देयर आर चांसेस. 50% अबव के चांस है. सो डेफिनेटली गो अहेड, मैनिफेस्ट इट, इट विल डेफिनेटली हैपन. ओके, yeah, this is what I'm getting the guidance for you. And just start taking knowledge from some senior teachers or जिस भी फील्ड, जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप पढ़ रहे हो, आप उसी में जो सीनियर्स हो और या कुछ अच्छे और प्रोफेसर्स हो या कुछ अच्छे और टीचर्स हो, उनसे आप अगर सीखोगे तो हो सकता है कि आपको और गाइडेंस मिल जाए उनसे. ठीक है, सो दिस इज़ द गाइडेंस फॉर यू. एंड राधे राधे. मेरा एग्ज़िट हो गया था. ओह माय गॉड. ओके, सो मैं अमन, आई जस्ट टेल यू इन द पर्सन. ओके, डोंट वरी, आई जस्ट टेल यू योर रीडिंग. हेलो आरुष, मेरा सोल्यूशन क्या है? तुम्हारा क्वेश्चन क्या है? यस मैम, मेरा सोल्यूशन क्या होगा? हेलो, अरे प्लीज़ बताइए सर, आपका क्या सोल्यूशन है? सुमित जी, आई एम टेकिंग योर क्वेश्चन. ओके, आई एम टेकिंग योर क्वेश्चन. डोंट वरी. For your career, okay? I'll be giving you some guidance for your career, and then we'll just go with the remedies because I have to take some other sessions also. Most welcome. Okay, so ठीक है. I feel right now, Sumit ji, ki you are facing some sort of negativity in your career right now, or maybe some suppression you are facing, or कुछ suppressing phase चल रहा है आपकी लाइफ में, which आपकी एनर्जीज़ को ख़राब कर रहा है, आपके पीस ऑफ माइंड को ख़राब कर रहा है. आपको कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो. आप बहुत ही ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो राइट नाउ. यू आर फीलिंग वेरी टायर्ड राइट नाउ एंड यू फील लाइक कि बस मेरा बहुत हो गया है. दैट काइंड ऑफ सिचुएशन यू आर इन राइट नाउ. एंड जस्ट ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही हैं क्योंकि कहीं ना कहीं यू आर गेटिंग अवेकन फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स. आपके लाइफ में जो भी नेगेटिव सिचुएशन आती है उसका कहीं ना कहीं कुछ रीज़न होता है, इसलिए वो नेगेटिविटी हमारी लाइफ में आती है. ठीक है, सो आप इसको नेगेटिव ना लेके पॉजिटिव में लो एंड जो भी सिचुएशन चल रही है उससे बाहर हम कैसे निकल सकते हैं उस चीज़ पे फोकस करो, रादर कि हर समय मेरी लाइफ में प्रॉब्लम ये थी, ये आप बोलना छोड़ दो. ठीक है, आपका रिबर्थ हो रहा है, आपकी अवेकनिंग हो रही है. मे बी आई फील कि यू आर कनेक्टेड विद सम स्पिरिचुअल any spiritual person, or you are doing some spiritual practices also. तो अगर if you are doing, you are definitely, your soul is awakening from all these things. And so this is the thing. And just आपकी लाइफ में अब awareness आ रही है. आपकी लाइफ में a lot of you are just getting what you really want in your life. Very soon I can feel that जिस चीज़ के लिए आप आपने होप भी छोड़ दी थी, शायद वो चीज़ आपको मिल जाए एट अनएक्सपेक्टेड टाइम. सो दिस कैन बी द थिंग. एंड जस्ट बी होपफुल एंड फॉलो मैनिफेस्ट दिस वट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ, एंड जस्ट फॉलो द रेमेडीज विच आई विल शेयर. ओके,
आगे कब बढ़ूँगा। यू आर ऑलरेडी सक्सीडिंग या आरुष, क्या बात कर रहे हो यार। वेट आई चेक इट फॉर यू देन टू। ओके, मैं तुम्हारे लिए गाइडेंस लेती हूँ कि व्हाट एग्जैक्टली यू आर गेटिंग इन योर लाइफ। ओके, आरुष के लिए गाइडेंस। ओके, ठीक है। अभी व्हाट इज़ हैपनिंग ना, तुम्हारी लाइफ में कुछ बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कुछ ट्रांसफॉर्मेटिंग फेजेस चल रहे हैं, एंड कुछ समझ नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली लाइफ जा कहाँ रही है। ऐसा काइंड ऑफ सीन हो गया तुम्हारी लाइफ में राइट नाउ। बट आई वॉन्ट टू टेल यू एंड एंजल्स आर गिविंग दिस गाइडेंस कि वेरी सून यू आर गेटिंग हेल्प फ्रॉम डिवाइन। कुछ बहुत अच्छा होने वाला है लाइफ में, कुछ यू आर गेटिंग एनी थिंग यू आर मैनिफेस्टिंग फ्रॉम सो लॉन्ग। कोई एक अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है एंड दैट अपॉर्चुनिटी विल बी द बेस्ट फॉर यू। ओके, उसको बस ग्रैब कर लेना, जो भी अपॉर्चुनिटी आए, ठीक है। उसमें तुम्हें ये पहले डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। उस टाइम पे यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट विद मी कि मुझे ये डिसीजन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या मुझे इस चीज़ में जाना चाहिए, इस चीज़ में जाना चाहिए। बिकॉज आई फील कि एक टाइम पे तुम्हारे पास हो सकते हैं दो अपॉर्चुनिटीज़ आए एंड यू फील कन्फ्यूज कि मुझे कौन सा लेना चाहिए, बिकॉज बोथ विल बी वेरी प्रॉस्पेरस। तो ये सिचुएशन हो सकती है। उस टाइम पे अपनी टैलेंट के बेस पे, अपने क्रिएटिव थॉट के बेस पे तुम अच्छा अपॉर्चुनिटी चूज़ कर लोगे। बट इफ़ देन टू ऑल्सो अगर यू फील कन्फ्यूज, इफ़ यू फील कि मुझे एग्जैक्टली करना क्या है, लेना क्या है, देन यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट विद मी। बट वेरी सून यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट अ लॉट ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ। ओके, ये देखो सेलिब्रेशन का कार्ड भी आ गया फिर यू। तो वेरी सून बहुत अच्छा टाइम आ रहा है। जस्ट बी होपफुल, बी पॉजिटिव, एंड अपने टाइम पे फ्रूट्स मिल जाएंगे तुम्हारे हार्ड वर्क के। ओके, आई नो यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क दीज डेज, बट डिवाइन टाइम पे यू विल गेट व्हाट यू रियली वांट। ओके, सो दिस वाज द रीडिंग फॉर टुडे, एंड आई विल टेक दिस नेक्स्ट टाइम सुंदर जी। Now I'll be just telling you the remedies, or I think there are some people. तो सी फर्स्ट ऑफ ऑल आज क्या करना है, आज है 11/11 पोर्टल। ऑलरेडी मेरा पॉडकास्ट आ चुका है गाइज, थैंक यू सो मच। एंड मेरा पॉडकास्ट आप लोग ज़रूर देखिए। एंड हेलो भूमिका भाभी, हाउ आर यू। सो मेरा पॉडकास्ट आ चुका है एंड यू गाइज कैन जस्ट गो थ्रू इट। आई हैव शेयर्ड अ लॉट ऑफ अमेजिंग थिंग्स इन दैट। बट बिसाइड्स दैट टुडे यू हैव टू डू 11/11 टेक्निक, जिसका रील भी आया है। आई हैव पोस्टेड इट। इफ़ यू डोंट नो आई जस्ट शेयर अगेन। हाँ, मुझसे अपॉइंटमेंट ले लेना तुम। ओके, सो आई विल बी शेयरिंग द 11/11 टेक्निक विद यू गाइज। व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि आपने एक वाइट पीस ऑफ पेपर लेना है, उसमें अपनी एक कोई भी विश लिखनी है, प्रेजेंट टेंस में लिखनी है। फर्स्ट आपको 11/11 लिखना है, उसके बाद आपको प्रेजेंट टेंस में अपनी विश लिखनी है, उसके बाद लास्ट में आपको 1176 एंजल नंबर लिखना है, एंड देन थैंक यू यूनिवर्स। उसके बाद आपको उस पेपर को अपनी तरफ फोल्ड करके देन यू हैव टू जस्ट बर्न दैट पेपर, एंड उसके जो एशेज होंगे उसे आप घर के बाहर ब्लो कर दोगे। ओके, मुझे एवरीवन दिस रेमेडी इज़ फॉर एवरीवन। ओके, तो ये आपको करना है आज एंड नेक्स्ट 21 डेज तक लगातार, और रेड पेन से लिखना है, ठीक है। दिस इज़ क्लियर। एंड देन सेकेंड थिंग व्हाट यू कैन डू इज़ कि अगर इफ़ यू हैव येलो पेपर विद यू, येलो पेपर होगा तो बेस्ट होगा, नहीं है तो आप वाइट पेपर भी ले सकते हो। उस पर आपको 11 विशेज़ लिखनी है, लाइक अभी से लेके नेक्स्ट ईयर 11/11 पोर्टल तक की आपको क्या क्या चाहिए नेक्स्ट ईयर तक, या कोई भी 11 विशेज़ आप प्रेजेंट टेंस पे लिखो रेड कलर के पेन से येलो पेपर पे। इफ़ येलो नहीं है तो वाइट भी चलेगा, नो इश्यूज़। राइट ऑल योर विशेज़
एंड देन उसको अपने आप घर का आपको वेस्ट का जोन चेक करना है कि आपके घर पे वेस्ट का जोन कहाँ पे है, ठीक है। कंपास से यू कैन ईजिली चेक कि वेस्ट का जोन कहाँ है। ऑल्दो एंड्रॉयड के कंपास सही नहीं बताते हैं, तो इफ़ यू गाइज हैव आईफोन देन यूज़ दैट आईफोन टू लोकेट वेयर एग्जैक्टली योर वेस्ट जोन इज़। एंड वहाँ पे आपको वो 11 विश वाला जो पेपर है वो आपको जोन में रख देना है वेस्ट के, ठीक है। एंड उसको रख के रहने देना है। नेक्स्ट ईयर आप उसको चेंज करोगे एंड यू विल सी डेफिनेटली कि नेक्स्ट ईयर आप जब उस पेपर को दोबारा देखोगे आपकी मोस्ट ऑफ द विशेस फुलफिल हो चुकी होंगी, ठीक है। सो जस्ट डू दिस टुडे एंड उस जो 11-11 टेक्निक फर्स्ट आई शेयर यू कैन डू इट एट 11:11 PM टुडे, ओके। एंड जो ये टेक्निक मैंने बताई है आज आप कभी भी कर सकते हो 11 विश वाली, and you can just keep it in the west zone of your house. And then second उसके बाद what you can do is कि आज से लेके next 11 days तक what you can do is कि हनुमान चालीसा you all know very well, so start chanting हनुमान चालीसा for 11 times till 11 days. If you have any wish, इफ़ यू हैव एनी वर्क टू बी फुलफिल्ड, आपको कोई काम नहीं हो रहा है, आप उसको काम करना चाहते हो या आप करवाना चाहते हो, तो आप हनुमान जी से प्रे करिए। आप हर दिन आज से लेके नेक्स्ट 11 डेज तक आपको 11 हनुमान चालीसा का पाठ करना है डेली। एंड इफ़ ड्रम मोड में करिए दैट इज़ रियली वेरी गुड। इफ़ नॉट देन आप किसी भी टाइम पे हर दिन लगातार 11 दिन तक 11 हनुमान चालीसा का यू हैव टू डू द पार्ट, ओके। सो दिस इज़ व्हाट यू कैन डू। यू कैन ऑल्सो डू विजुअलाइजेशन। आपकी अगर कोई विश है आप उसको विजुअलाइज कर सकते हो कि एग्जैक्टली कैसा रहेगा एंड कैसे होगा। इफ़ यू वांट लाइक फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट एनी कार, तो you have thought of that car कि you sit in meditation mode and just think of कि when you have bought that car, तो आप what you are exactly seeing, your car is there, you are standing beside your car and your family is so happy, you are so happy, you are driving your dream car। ये सारी चीज़ें you have to visualize it as if वो चीज़ already है, ठीक है। ये चीज़ जब आप करोगे ना धीरे धीरे करके it will definitely come in your reality. So try this and just surrender, don't get attached to the techniques। जो भी टेक्निक करो उससे कभी भी अटैच होके नहीं रहना, उससे डिटैच होना स्टार्ट हो जाओ, ठीक है। अब मैं कोई क्वेश्चन नहीं ले रही हूँ, अब मैं सिर्फ रेमेडी कर रही हूँ। क्वेश्चन का कुछ होगा तो बाद में आई जस्ट टेल यू, ओके। हाय अतिन। एंड देन या सो विजुअलाइज कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो एंड व्हाट यू कैन डू इज़ कि हाय सो या एंड किसी को बिजनेस ग्रोथ चाहिए, मनी से रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं या प्रॉब्लम्स चल रही है, मनी आ नहीं रहा है या कहीं स्टक है या कुछ भी फाइनेंस से रिलेटेड इशू है, तो यार यू गाइज प्लीज़ डोंट फाइट हेयर, ओके। तो या कोई भी इशू है फाइनेंस से रिलेटेड है, आप एक बहुत पावरफुल मंत्र है जिसका चैंट आप आज से स्टार्ट कर सकते हो, दैट इज़ ओम वसुधरे स्वाहा। इसका मैंने वीडियो भी अपने पेज पे डाला हुआ है, गो देयर, चेक दैट वीडियो एंड स्टार्ट चैंटिंग दैट मंत्रा डेली, बिकॉज दैट मंत्रा इज़ रियली वेरी पावरफुल। आप ओम वसुधरे स्वाहा ये 108 टाइम्स डेली चैंट करना, अगर आज से स्टार्ट करते हैं इट्स वेरी गुड, okay, and just keep doing it like for next 31 days or 41 days, okay, to see its miraculous results. And within 3 days of starting this mantra chanting, you will see your results, you will start getting the results for money related. And what you can do is कि एक बहुत effective if you want you can guys do unexpected money जिसको चाहिए। for unexpected money के लिए you can use some angel numbers, you can write those angel numbers in your left hand। यहाँ पे ऐसे लिखना है, अपने लेफ्ट हैंड के पाम पे ग्रीन कलर की पेन से आपको लिखना है 520741 आई विल मेंशन दिस इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस लाइव वीडियो ऑल्सो, and you can just go and check it there। and 888 888 you have to write and 5207418, ठीक है। ये दोनों एंजल नंबर्स यू कैन यूज़ फॉर गेटिंग अनएक्सपेक्टेड मनी
And if you are in business, or in the field of business, or you are not getting clients or something, then for getting clients, what you can do is ki you can write 71588. Okay, so this you can do. And yeah, just start affirmation, from today. Start doing techniques from today, because today is the best day to manifest anything in your life. And I wish and I bless you all, that this 1111 portal brings lots of happiness, success, joy in your life. And may everything you get, whatever you want, may a lot of abundance come into your life, and you enter into the most abundant era of your life. एंड या जस्ट लास्ट में मुझे एक चीज़ बतानी है कि आई एम लॉन्चिंग माई मनी हीलिंग प्रोग्राम वेरी सून. So if you guys are interested in that program, you can just definitely join my money healing program. It will be starting within next week, and it will be a 5-day program. So you can just join it there. I'll be posting official details and everything tomorrow. And do let me know. And whosoever is interested in inner child healing, that is most welcome, Vaishnavi. Lots of love to you. And whosoever is interested in taking inner child healing course, they can definitely let me know. Okay, Avinash, I'll be starting my money healing program next week, so you can enroll before, because I am taking only 5 people and 3 people have already booked it, so only 2 seats are left. So if you are interested into this, then definitely you can enroll in that. ओके, एंड द फी फॉर दिस जस्ट फर्स्ट बैच के लिए मैंने एक ऑफ़र रखा है. उसके बाद जितने बैचेस होंगे उनके ओरिजिनल प्राइस पे ही रहेगा. 5555 पे सारे बैचेस रहेंगे सेकेंड बैच से. बट फर्स्ट बैच इज़ ओनली एट 1555. सो इट्स अ बिग डील फॉर यू गाइज, एंड बहुत वर्थ इट होने वाला है. आई विल बी हेल्पिंग यू अपग्रेड योर मनी एनर्जी स्पेशली. सो you can just really go ahead with this. And if you have any questions or queries, then definitely DM me in my personal okay. And yeah, this is for it, and lots of love to you. Radhe Radhe. Jai Shri Ram. Jai Bageshwar Dham. See you soon. Lots of love. Bye.